और अश्विन इंडिया के जो गेंदबाज हैं वो नेट प्रैक्टिस कर रहे हैं। आप देखिए जैसे ओवल ग्राउंड में नेट प्रैक्टिस चल रहा है टीम इंडिया का। नेट प्रैक्टिस चल रहा है। आर अश्विन प्रैक्टिस कर रहे हैं बॉलिंग का। आप देखें न्यूज़ बॉक्स भारत में आर अश्विन बॉलिंग कर रहे हैं। Had to go through, with the visa situation and everything like that. I think he's handled this whole tour very, very well. Someone a lot older than what he is. Obviously, missing out on games is always disappointing. But again, when we keep the selection process consistent as we do, and actually, give pretty in detail reasons as to why, it was understandable to Rayan as to why we've gone with that option. But look, I think the 3 games in which he's played, he's gone out and he's tried everything that we've asked of him as to why he's been in the team. I think any other team, he's batting higher than number 8. And I think the way in which he's taken the game on with the ball is something that I've been very, very impressed with. Leg spinners, it is a tough sport. You can get put under the pump, but I think even last week bowling at the 2 Indian batters who are obviously looking to get on with it. I think he'll take a lot of learning out of these 3 games, which will only progress his career rather than not being the person involved in that situation, if that makes sense. We'll go Will and then someone down. Speak up, Will, please. Ben, you said you never seen a pitch like this. Is it important that you know the team that prejudge too much, go into the game too many ideas about how the game might play out, and they do them? Yeah, and I think, look, obviously we get asked about the pitch and we give our opinion, but that doesn't mean that we're going in with too many preconceived ideas. Pitch could be flat as a pancake. Who knows? But if it is, we'll adapt to that. If it does, do more than what we think it is, then we'll adapt to that as well. I think we're a team in which we don't let those kind of, sort of conversations seep into what we do. Yeah. And you generally see best bowlers don't worry about batting, but was there any temptation No, you're right. I think having a player like Dan Lawrence in our squad is actually very useful. Although obviously he's not played a part yet, but when you've got someone who offers you so much with the bat, the ball, in the field, you can, sometimes be tempted to just, throw that person in because of how much that they can offer you all round. But I back all the players. We've seen backing players gives us success, and yeah, we picked our 11 again, who we think is going to give us the best chance of winning this week. So now, Well, how are the transfer challenges differ from batting or fast bowling for which to spinner territory? If it's on a fast bowling friendly wicket, you'll face more of it. If it's on a spin friendly wicket, you'll face more spin. I guess that's the challenges of it. Yeah. okay, we'll take a couple more. Gentlemen in the corner here, and one more after that. Pass the mic down. All the way down, please. Thank you. And then one more after this. Well, does that mean any conversations joining this kind of crowd and you also have the first couple of days. Could you ask the question without the microphone? It's a bit muffled. Thanks. How you feel about your own batting and I couldn't. Sorry, we start again. I didn't get the start of it. have there been any conversations with Johnny Pascoe when you pick up the gun? So I'm going to and thoughts on how you're feeling about your own batting. You may not be able to find first match that happened from you playing. So what's the question? The first part of it was have you had any conversations with Johnny Pascoe? Not being able to catch. What about? What about? Good is batting. Okay. Yeah. And on your own batting.
No, none. As you know, Johnny, if batters have a tough time over a short period of time, it's people come under scrutiny. But I don't look at it like that. I look at what Johnny's contributed for a long period of time since I become captain. I say that as his money in the bank. He's a quality player. He's someone who's been very, very integral to what we've done. In terms of my own batting, yeah, you always want to go out and get more. I've felt, pretty good every time I've been out in the middle. But yeah, just sometimes if you think, oh, I need to get a big score, you start striving for too much. But I'm happy with how I felt every time I've walked out into the middle so far in the series. Thanks. कल यानी 23 तारीख को जो भारत और इंग्लैंड के बीच टेस्ट मैच खेला जाना है, सीरीज का चौथा टेस्ट मैच रांची के जेएसए इंटरनेशनल स्टेडियम में, इसको लेके दोनों टीम जोर जोर से तैयारी शुरू कर दी है। सुबह के सत्र में टीम इंडिया के खिलाड़ियों ने इस मैदान में जमकर पसीना बहाया और आप देख सकते हैं कि अभी इंग्लैंड टीम के खिलाड़ी जेएसए ओवल ग्राउंड में वार्म अप कर रहे हैं और काफी देर से ये खिलाड़ी वार्म अप कर रहे हैं। इससे पहले खिलाड़ियों ने फुटबॉल से कुछ देर खेला, फुटबॉल के साथ अपने बॉडी को फिट किए और बॉडी गर्म किए। उसके बाद अब देख सकते हैं कि आप खिलाड़ी जो है वो कैचिंग प्रैक्टिस कर रहे हैं, कुछ खिलाड़ी कैचिंग प्रैक्टिस कर रहे हैं, कुछ खिलाड़ी बैटिंग कर रहे हैं, कुछ खिलाड़ी रनिंग कर रहे हैं। यानी कहा जा सकता है कि इंग्लैंड के लिए कल जो भारत के साथ मुकाबला खेला जाना है, सीरीज का चौथा मैच रांची के जेएसए स्टेडियम में खेला जाएगा। ये बहुत ही अहम मुकाबला है इंग्लैंड के लिए, क्योंकि 5 टेस्ट मैचों की जो सीरीज है उसमें टीम इंडिया 2-1 से लीड कर रही है और अगर ये टेस्ट मैच रांची में टीम इंडिया जीत जाती है तो सीरीज पर कब्जा जमा लेगी। वहीं दूसरी ओर इंग्लैंड के लिए ये मैच काफी अहम होगा कि ये इंग्लैंड की टीम चाहेगी कि इस मैच को हम लूज नहीं करें ताकि हम सीरीज में बने रहें। अभी से कुछ देर पहले जो इंग्लैंड टीम के कैप्टन है बेन स्टोक्स, उन्होंने प्रेस को मुखातिब किया और प्रेस से बात करते हुए बताया कि हर मैच अलग अलग होता है, हर ग्राउंड अलग होता है, उसका कंडीशन अलग होता है। साथ ही उन्होंने 2 बड़े खिलाड़ियों का नाम लेते हुए बताया, मार्क वुड के बारे और एंडरसन के बारे की। ये 2 हमारे टीम के गेम चेंजर खिलाड़ी हैं, ये किसी भी मैच में अचानक पासा पलट सकते हैं। उन्होंने बताया कि ये सही बात है कि मार्क वुड का जो परफॉर्मेंस होना चाहिए अभी तक सीरीज में नहीं मिल पा रहा है, लेकिन टीम को काफी उम्मीदें हैं मार्क वुड से और मार्क वुड ने बड़े-बड़े मैच में इंग्लैंड के लिए अहम रोल निभाया है। साथ ही जेम्स एंडरसन जो तेज गेंदबाज है, उनके बारे में बेन स्टोक्स कप्तान ने मीडिया को प्रेस कॉन्फ्रेंस में बताया कि एंडरसन के अंदर वो क्वालिटी है कि वो मैच में कभी भी पासा पलटने का मादा रखते हैं। यानी कहा जा सकता है कि कल जो मुकाबला जेएसए स्टेडियम में रांची में खेला जाएगा भारत और इंग्लैंड के बीच चौथा टेस्ट मैच, वो काफी जोरदार मैच होगा और इंग्लैंड की पूरी कोशिश होगी कि हर हाल में इस मैच को सेफ जोन में लेके जाएं। अगर ड्रॉ हो जाता है तो उनके लिए अच्छा है और या फिर मैच भी जीतने की कोशिश करेंगे। और दूसरी ओर वहीं टीम इंडिया चाहेगी कि जो 5वां मैच धर्मशाला में खेला जाना है, उससे पहले ही हम रांची में सीरीज पर कब्जा जमा ले ताकि किसी तरह की परेशानी 5वें टेस्ट मैच को लेके नहीं हो। अब तो कल का जो दिन होगा, अब जो सुबह का सत्र होगा, शुरुआत होगा मैच का, तो इसी से पता चलेगा कि अब दोनों टीमों की रणनीति क्या मैच में बनी है और टॉस भी बहुत अहम भूमिका निभाएगा टेस्ट मैच में। आपको बता दें कि ये जो ग्राउंड है जेएसए का, जो पिछला 2 टेस्ट मैच हुआ है, ये टर्निंग विकेट रहा है और स्पिनर्स को काफी मदद इस मैच में मिला है। अगर स्पिनर्स को मदद मिलता है इस मैच में तो टीम इंडिया में आर अश्विन जैसे बड़े गेंदबाज है, साथ ही रविंद्र जडेजा भी बड़े गेंदबाज है, स्पिन में वो कमाल कर सकते हैं और मैच का रुख बदलने का पूरा कोशिश कर सकते हैं। और पूरी उन लोगों के अंदर, अश्विन और जडेजा के अंदर ये क्वालिटी है कि कहीं से भी मैच को टर्न कर सकते हैं। एक मैच में यहाँ जडेजा ने 4 विकेट लेके साउथ अफ्रीका टीम को धराशायी किया था और उस मैच में टीम इंडिया की टीम जीती थी। उसमें मुख्य भूमिका रविंद्र जडेजा ने निभाई थी। अभी आप देख सकते हैं कि सारे खिलाड़ी कड़ी धूप में यहाँ प्रैक्टिस कर रहे हैं।